Hello students, this video is for grade 1st. Let us start. We will read about 3 different sections in this sheet: English, Maths and Evs. Yes, we will learn about 3 different subjects: English, Maths and Evs. So, let's start with the first section, which is of English. Circle the verbs with blue color. One has been already done for you. What we have to do in this question is we have to circle the verbs. हमें क्या करना है? verbs पे circle करना है. verbs means doing words, action words पे हमें circle करना है with blue color. blue color की help से हमें circle करना है किस पे? verbs पे. Okay, as you can see, one has been already done for you. एक आपके लिए एज एन एग्जाम्पल किया हुआ है. टॉक, TALK, टॉक. इट इज ऑलरेडी encircled. Now what we have to do is we have to circle other verbs. और भी verbs होंगे, उन्हें हमें circle करना है. Like run, sing, eat, crawl, sit. Okay. Like this, we have to circle all the verbs in this question. What are verbs? Verbs are doing words or action words. Okay, action words or doing words are called verbs. VERBS, verbs. Everyone repeat with me. Doing words or action words are called verb. Doing words or action words are called verb. Very good. Now see the next section, which is of maths. In this, what we have to do is we have to fill in the missing minuend. Okay, in the first question of maths, we have to fill in the missing minuend. Missing number को यहाँ पे हमें fill करना है. Like dash minus 7 equals to 2. Means कितने number में से 7 को minus करेंगे जो हमें 2 मिले. How we will find out? हम क्या करेंगे? 7 plus 2 कर देंगे. 7 plus 2 it will be 9. Yes, 7 plus 2 will be 9. So what we will write? We will fill 9. 9 minus 7 equals to 2. Okay, 9 minus 7, 2. So in this way we will fill the missing minuend. इस तरीके से हम missing minuends fill up करेंगे. From which number we will subtract 3 so that we can get 6. किसमें से हम 3 माइनस करेंगे ताकि हमें 6 मिले? Yes, 9. We will subtract from 9. 9 minus 3, it will be 6. How we will get this? We will add 3 plus 6. 3 plus 6 को add करेंगे कितना आएगा? 9. 9 minus 3 will be 6. 8, you can see, dash minus 8 equals to 1. So how we will find the exact number? It will be 9. 8 plus 1 will be 9. We will fill 9. 9 minus 8 equals to 1. Okay? Understood? In this way you have to fill the missing minuend. आपको missing minuend इसी तरीके से fill up करना है. क्या करेंगे? आप गिवन नंबर को आंसर से ऐड कर देंगे तो आपको मिसिंग minuend आ जाएगा. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम. ओके, वर्ड प्रॉब्लम्स है. रोहन हैड 5 strawberries. Okay, Rohan had
5 strawberries. रोहन के पास 5 strawberries हैं. Okay. Sheena took 2 strawberries from him. शीना ने 2 strawberries उससे ले ली. How many strawberries are left with रोहन? अब बताना है कि रोहन के पास कितने स्ट्रॉबेरीज बचे. मीन्स he was having 5 and Sheena took 2. मतलब उसके पास 5 थे, 2 ले लिए गए. तो बताइए कितने बचे. 5 minus 2. We will subtract. Okay. कम हो गए ना. So we will subtract. 5 minus 2 it will be 3. Rohan has left with 3 strawberries now. Rohan had left with 3 strawberries now. Okay. So in this way you have to solve the given word problem. Shreya had 9 pens. She gave 6 pens to Mohit and 2 to Tanya. Okay. श्रेया के पास 9 पेन्स हैं. 6 उसने मोहित को दे दी और 2 तान्या को. तो अब हमें बताना है कि श्रेया के पास कितनी पेन्स बची. 9 minus 6. How many will? It will be 3. अब 3 में से 2 subtract कर दीजिए. It will be 1. So Shreya left with 1 pen. Okay. Or you can do it like पहले आप फाइंड आउट कर लो कि टोटल उसने कितनी पेन्स दे दी है. मीन्स बांट दी हैं. तो 6 + 2. पहले हम 6 + 2 को ऐड कर लेंगे. इट विल बी 8 हो जाएगा. 8 पेन्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दी. ओके. और 9 पेन्स थी. 9 minus 8 इट विल बी 1. So in this way you can solve these word problems. This was all about maths section. Now see the last section, which is of EVS. Fill in the blanks. What we have to do in this? We have to fill in the blanks. इसमें हमें blanks fill करने हैं. I have a sibling. She is a girl. She is my dash. Her name is dash. What we have to do in this? इसमें क्या करना है? I have a sibling. Sibling means भाई या बहन, उसे हम sibling कहते हैं. She is a girl. वो एक लड़की है. ओके. She is my. वो आपकी क्या लगती है? बहन. She is my sister. And her name is. उसका नेम क्या है ये आपको यहाँ राइट करना है. उसका नेम क्या है? And after that, second question. I have a sibling. He is a boy. He is my dash. His name is dash. Okay. यहाँ again आपने दिया है. I have a sibling. He is a boy. वो एक लड़का है. He is my brother. Okay. मेरा भाई है. His name is. उसका नाम क्या है? यहाँ अपने भाई का नेम राइट करेंगे आप. ओके. बहन का नेम राइट करेंगे. भाई का नेम राइट करेंगे. I have a male parent. मेरे पास एक मेल पेरेंट है. He is my father. Parent means माता पिता. ओके. मेल मतलब आदमी हो जाएगा कोई. सो आदमी कौन है? आपके पापा, आपके फादर. सो ही इज माई फादर. हिज नेम इज. इसमें आप अपने फादर का नेम राइट करेंगे. ओके. I have a female parent. एक फीमेल पेरेंट है. मीन्स योर मदर. इस नाउ इट इज कंसिडरिंग एज योर मदर. शी इज माई मदर. हर नेम इज. उनका नेम क्या है? ये आपको यहाँ पे राइट करना है. यहाँ पे आप अपनी मदर का नेम फिल करेंगे. अपनी माँ का नेम फिल करेंगे. नाउ सी द नेक्स्ट वन. A family having only parents and real siblings is called. A family having only parents and real siblings is called
एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स होते हैं और भाई बहन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली। ओके, अगर सिर्फ मम्मी पापा और भाई बहन है तो क्या होगा? वो होगी एक स्मॉल फैमिली, दैट इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। Or a family having grandparents, parents, uncle, aunt, cousins is called joint family. एक ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादी दादा हूँ, पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा हूँ, अंकल आंटी हूँ, कजन्स हूँ, उसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज अ जॉइंट फैमिली. Okay, so this section was about family. Okay, that how many members and what kind of families. So we have two types of family: small family, nuclear family, joint family, big family. Okay, small family को ही nuclear family कहते हैं और big family को ही हम joint family कहते हैं. Okay, so this was all about today's sheet. In English, we have learned about verbs. We have circled verbs with blue color. And in maths, we have performed subtraction sums. And in the last EVS, we have learned about family and their types and different family members. Okay. I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt related to any question, any topic, any subject, any section, you can ask me. Thank you.